Let's also show you a latest ground report that has been sent by my colleague Shiv Arur from Chandni Chowk. Delhi's famous Jama Masjid from this vantage point that the Headlines Today crew has selected here in Chandni Chowk, one of the highest points, giving you a real sense of the constituency itself. This vantage point provides you with probably the most clear view of just what a congested constituency Chandni Chowk really is. It has remained this way for many, many decades together. Nothing has really changed qualitatively on the ground. We're on the terrace of a home owned by a family that has been here for many decades. Members of that family have gone out to vote. Some of them will be going out to vote in a short while from now in this all-important constituency that's seeing a triangular fight. And we have some of the members of that family here with us to speak to us on Headlines Today and tell us not just about their aspirations, but what they hope will be a change for this place that they call their home. Sir, aap kisko vote denge? What do you want from Chandni Chowk? What do you want for Chandni Chowk? देखिए, बात विकास के मुद्दे के ऊपर हो रही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है टीवी के अंदर विकास दिखाई देता है। इससे पहले यहाँ चांदनी चौक में कपिल सिब्बल साहब रह चुके हैं। 5 साल में एक दफ़ा भी आन के नहीं भटके, जिसके पास इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हों, चाहे इसके अंदर हारून यूसुफ क्यों ना हो। तारों की हालात देख लीजिए आप, वायर किस तरीके से पड़े हुए हैं, रोड किस तरीके से हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ का। आज जिस टाइम वोट की बात होती है तो आते हैं, फिर भीख मांगते हैं, फिर 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे। तो एक नया आदमी है आशुतोष, आम आदमी पार्टी, यहाँ के लोगों की तो यही धारणा है कि एक नया कोई भी एक अवसर मिलना चाहिए, और मुझे लगता है वो कुछ करके दिखाएंगे। जैसे इससे पिछले चाहे उनकी 49 दिन की सरकार बनी, कुछ भी है, चाहे फॉर द टाइम बिंग उन्होंने बिजली के रेट रिड्यूस करे, सीएनजी के रेट रिड्यूस करे। आम आदमी को क्या चाहिए? ये सारी चीज़ें चाहिए जिसके अंदर वो। क्या आपने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया है? क्या आपको कोई होप है कि कुछ बदलाव आ सकता है चांदनी चौक में? जी होगा, ज़रूर, क्यों नहीं होगा। नया बदलाव आएगा और तकरीबन आम आदमी पार्टी ही आएगी। जिस तरीके से दिल्ली में सरकार बनी थी अभी 49 दिन की, इसीलिए अब 5 साल की सरकार जो बनेगी वो आम आदमी पार्टी की बनेगी। आप क्या कहना चाहेंगे चांदनी चौक के बारे में? क्या देखना चाहेंगे? चांदनी चौक की सड़कों में सफाई देखना चाहते हैं हम। स्कूल अच्छे बने होने चाहिए, हॉस्पिटल वो अच्छे क्लीन होने चाहिए, बस यही। Cleanliness, infrastructure, decongestion is one of the main things about Chandni Chowk. It's something we hear from virtually everyone we've actually spoken to in this particular area. Everyone we speak to talks about how amenities never come. Like the people we've just spoken to, they talk about how there are promises every 5 years. People who step up talk about promises, talk about a revolution that will change Chandni Chowk and give the many thousands of people who live here a new life, a new home, new hope, access to facilities, access to really modern infrastructure. If you look at the place around you, you can get a real sense of what people are really dealing with here. There are little children playing, among very dangerous parts of the city, very precarious, rickety terraces. Many parts of these areas are part of a vicious cycle that politicians have opportunistically made part of their vote bank. And therefore, there's not very much hope left. But with a new option available this year in the Aam Aadmi Party, we are hearing a voice from this constituency, Chandni Chowk in Delhi, about how at least now it's no longer just a ping pong between the Congress and the BJP. There could be another option. The real question is, will that option also be able to deliver in the event that that option becomes a viable alternative in Chandni Chowk? That's the big question. With camera person Arvind Kumar in Chandni Chowk, Shiv Arur for Headlines Today.